Hello बच्चों, let's read this question. Molal elevation constant and molal depression constant of water respectively in Kelvin per meter are 0.5 to 1.86, 1.86, 0.52, 1.5 to 0.86, 0.86 और 1.52. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा वाटर के लिए. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. सो लेट अस सी ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं. जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के बी एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एफ. जो यहाँ पे B है दैट रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग एंड F रिप्रेजेंट फ्रीजिंग. व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व किया जाता है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. सो वी कैन से molar elevation constant can be defined as the elevation in the boiling point. It is elevation in the boiling point produced when 1 mole of non-volatile, it is non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent. एंड इसी कांस्टेंट को हम यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. नाउ लेट अस सी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है. एज द वर्ड सजेस्ट डिप्रेशन विच मींस लोअर हो जाना. द सिमिलर वे व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस होगा दैट कैन बी सेड टू बी molar depression constant. So we can write for Kf it is depression in freezing point produced when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें के बी एंड के एफ का वैल्यू निकालना है फॉर वाटर. जो हमारे पास फॉर्मूला आता है फॉर द सेम के बी इज इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बॉइलिंग में वेपर्स फॉर्म होंगे फ्रॉम लिक्विड टू वेपर जब बनते हैं दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करेंगे एंड for Kf formula is RTF square divided by 1000 multiplied
LF, that is latent heat of freezing point, and TB जो है that represents the boiling temperature and TF represent freezing temperature. Now let us put the values. जो हमारे पास R है उसका वैल्यू हम कैलोरी में लेंगे, विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड केल्विन में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी 273 प्लस 100, 273 प्लस 100, इट कम्स आउट टू बी 373 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 373 स्क्वायर हो गया, विच इज डिवाइडेड बाय 1000. अब हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सो विच मीन्स वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है दैट इज दी 540 कैलोरी पर ग्राम, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. 2 multiplied 373 multiplied 373 divided by 1000 multiplied 540. तो जब हम 373 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 278 विच इज डिवाइडेड बाय 540 multiplied 10 100, that is 1000. So by division we will get 515.29 divided by 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.51529, जिसे हम लिख सकते हैं 0.52. सो ये हमारे पास आया Kb का वैल्यू फॉर वाटर. नाउ वी विल फाइंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf का वैल्यू निकालेंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू दी 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सो केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो 273 ही आएगा ओनली, एंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्रीज किया है, फ्यूज हो गए मॉलिक्यूल्स एंड दैट विल फॉर्म द आइस, एंड वो होता है 80. सो दीज टू थिंग्स, latent heat of vaporization 540 calorie per gram and latent heat of fusion or freezing which is 80 calorie per gram, these both we have to keep in mind. Now we have to do this multiplication and division. मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा, इट विल बी 149,058 divided by 80 and 1000, and by this division it comes out to be 1.86 Kelvin per meter. So जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, बाय दिस वी कैन राइट जो Kf और Kb का वैल्यू है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 0.52 and molar depression constant is 1.86, and from the given option it is option first. So जो option first है that will be the answer of this question, 0.52 and 1.86. So this is the answer of this question, whereas option second, third and fourth are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.